Good morning, all students. We are starting the topic of combination of errors in the first chapter of physics, units and measurements. So, very important topic. Let me tell you because there are lot many numericals based on this errors related topic. So, basically, what we are going to study in this. Let's say you are given a physical quantity which is a addition of two quantities. Let's say first quantity is A, second quantity is B. इन दोनों का एडिशन इज गिविंग यू Z. ओके, नाउ हाउ टू राइट एरर्स. ठीक है, तो एरर्स लिखा कैसे जाता है. लेट्स से आई हैव गिवन यू दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 25 kg and it is not necessary कि 25 ही मिलेगा हमेशा. You might get 25.5, you might get 24.5 also. So ये जो 0.5 है that is what is your error. ठीक है, so 25.5 मतलब 0.5 ज्यादा हो गया and 24.5 मतलब 0.5 less मेजर हो गया. So here the error is written as plus minus 0.5. I hope you got this. So this is the true value and this is the error involved in that. It could be on positive side also, it could be on negative side also. ठीक है, so ये एक एग्जांपल है एरर लिखने का. So same way फिलहाल हम लोग नंबर्स में डील नहीं करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ अल्फाबेट. लेट्स से द एरर इन दिस measuring of quantity A is delta A, then in B is delta B, and then in Z we have delta Z. Okay, so अगर हमको errors find करना है in this addition, so what we are going to do, we are simply going to add the errors, that's it. ठीक है, so error in Z which is also delta Z, you will simply write delta A plus minus delta B. So actually you are supposed to add, but जब final quantity लिखोगे you will write like this, Z plus minus delta Z. Got this? So ये alphabetically हम लोग देख रहे हैं, but best way to understand this concept is by taking a numerical. Okay, so we will be taking a numerical from your textbook exercise. So students, let's take the numerical from your textbook exercise. You can see that two masses are given. So मैं उसको ना अल्फाबेट से रिलेट करता हूँ. Let's say the mass m1 is 15.7 and उसमें error है 0.2. Then second mass is given m2 which is 27.3 plus minus 0.3. Okay, now what they have asked? They have asked you to find total mass. So total mass capital M, you know it is going to be m1 plus m2. So ये हो गया वही टाइप का. Z is equal to A plus B. Got this? So now what you will do? You will add this two. ठीक है? 15.7 plus 27.3. ठीक है? ये हो गया आपका Z का वैल्यू. प्लस माइनस यहाँ पर एरर्स को ऐड करो. So that will be 0.2 plus 0.3. ये हो गया आपका डेल्टा Z का वैल्यू. ओके, सो when you add this you will get answer as 43. इसको ऐड करो 43 plus minus this will give you 0.5 kg. So this is the total mass, that is 43, and this is the total error involved in that. Okay, so students, अगर errors हमको find करना है when two physical quantities are multiplied, then how it is done? So let's say there is a physical quantity Z which is A into B, or even you have physical quantity which is A divided by B. Example देता हूँ मैं, जैसे mass into acceleration is equal to force. Here I will take mass upon volume is equal to density. So multiply or divide अगर है, then how to find out the error? Okay, so formula is quite easy. Then in that case the error is found out by this formula, delta Z upon Z is equal to delta A upon A plus delta B upon B. Now in this case let me tell you the same formula. ठीक है,
डोंट कंसीडर कि चलो मल्टीप्लाई है तो यहाँ प्लस है, डिवाइड होगा तो यहाँ माइनस आएगा. नो, नथिंग सच. ओके, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, द एरर यू आर गोइंग टू फाइंड दिस वे. Got this? So again, we will take one numerical related to this to understand it more better. So students, the numerical is in front of you. You can see the distance and time is given. So read it carefully. Distance traveled by an object in time. This is the time. अब ऐसे seconds लिखा है, ठीक है? And this is the distance. They have asked you to find out the speed and its error. So I will write first of all the formula. कि चलो हमको पता है speed is equal to distance upon time. ये हो गया z equal to a upon b टाइप, ठीक है? So now if I want to find delta s, okay, upon s, then I will write delta d upon d plus delta t upon t. So first let's identify what are the values. So इसमें से अगर आप चेक करो तो t का वैल्यू 100 है, delta t is 1, whereas d value is 5.2 and delta d is 0.1. So कर दो इसको substitute. Let's solve this. Delta d 0.1 d 5.2 plus 1 and 100. Okay. So यहाँ पर आप decimal shift कर दो numerator as well as denominator. So this will give you 1 divided by 52 and 1 by 100 is 0.01. Got this? Now next cross multiply करेंगे. Okay. So this will give you 1 plus 0.52 divided by 52. So इधर आपका आंसर मिलेगा 1.52 divided by 52. अब बस इसको साइड में डिवाइड करते हैं. So 1.52 divided by 52. 0. It's not going to happen. Then 15.2 होगा. Again it will not happen. ठीक है? So अभी finally 152 होगा. Yes. Now 2s are 104. 48 left. अब 10s are 520 होगा. So definitely उससे कम है. So I'll go for 9s are 52 9s are 468. That's it. ठीक है? So 0.029 we got as the error. ठीक है? Now we have been asked to find the speed also. देखो, what is the speed? So speed का तो एक basic formula है which is distance upon time. Okay? So यहाँ पर आप directly check कर सकते हो. Speed is equal to distance upon time. चलो वो भी लिख देते हैं. S is equal to d upon t. So d value is 5.2. Time is 100. So this will give you 0.052 meter per second. Okay. So आपका final answer speed and its error will be written as final answer. We write in the form of z plus minus delta z. Okay. So my speed value is 0.052 plus minus my error is 0.029 and unit also you are supposed to give meter per second. So students, now we go for next type of error जिसमें errors है ना power के form में है. For example, let's say z is equal to a raised to 3. अगर ऐसा कोई टर्म दिया है तो अभी एरर कैसे फाइंड करने का? दिस इज अ न्यू टर्म. अब इसमें डेल्टा z कैसे फाइंड करने का? सो इट्स क्वाइट इजी. हियर यू कैन फाइंड डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a. क्यूब नहीं करना है, यू विल जस्ट मल्टीप्लाई 3 टाइम्स. ओके. ना इसके पीछे लॉजिक समझो. a क्यूब इज नथिंग बट a into a into a. करेक्ट. सो इसका डेल्टा a by a आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा. ठीक है. एंड मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, वी ऑलवेज ऐड. करेक्ट है कि नहीं? सो तीनों को ऐड करोगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं? सो दैट इज द लॉजिक. लेट्स टेक वन मोर टर्म जहां पर a नहीं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है. जैसे
z is equal to p raised to x q raised to y and s raised to z. अगर ऐसा कुछ है आपके पास तो कैसे फाइंड करोगे डेल्टा z अपॉन z? वेरी इजी, यू विल राइट डेल्टा p अपॉन p, रेस टू जो होता है वो मल्टीप्लाई कर देगा, सो x इनटू देन प्लस डेल्टा q अपॉन q रेस टू y, गॉट दिस, प्लस डेल्टा s अपॉन s इनटू z. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस वे in the numericals. So we will directly go to the numericals to better understand this part. So students, I am taking one extra numerical which is not there in your textbook, star mark, separate numerical है, okay, to understand a cube, z equal to a cube कैसे use होता है. Okay, so here radius is given, so देखो r का value है 3 meter, ठीक है, whereas this is the error, so delta r will be 0.3 meter. बट दिस, अब वॉल्यूम पूछा है, एरर इन वॉल्यूम. सो पहले तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैज अ फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब. बट दिस, अब हम लोग एरर फाइंड करेंगे, डेल्टा v अपॉन v. सो 4/3 एंड पाई, ये तो एक नंबर है, नंबर है मतलब फिक्स है. सो नंबर में कैसा एरर फिक्स होता है, तो एरर कैसे आएगा, पाई का वैल्यू 3.14 है तो है, no error will come in that. So here this part will have no error, उसका टेंशन लेने का नहीं. We will take directly which one, r cube. So ये a cube जैसा हो गया. So what we had done, 3 into delta r upon r. So let's solve this. This will give you 3 into delta r value is 0.3 divided by 3. So this way it got cancelled and the error you got is 0.3 meter cube. Okay, so I hope you got an idea how to take this type of numericals. Okay students, so this is a numerical from your exercise, quite interesting, quite easy. So यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला दिया हुआ है, x equal to, ठीक है, a raised to 4, b raised to 3, c raised to 1/3, d raised to half, and they have asked you to find the percentage error in x, and a का error 2%, b 3, c 3 and d 4. So how we are going to calculate? See, quite easy to find percentage error in x. What we will do, वो जो powers होता है वो हम आगे लिख देते हैं, 4 into, we will have percentage error in a plus 3 into percentage error in b plus 1/3, then percentage error in c plus half, percentage error in d. I hope you got this. Powers है वो हम आगे लिखते हैं and then that term a b और c. Okay, and capital नहीं लिखना है, small. Okay, so now just substitute the values. 4 into percentage error in a is 2 plus 3 into percentage error in b is 3 plus 1/3 into percentage error in c is 3 plus half, percentage error in d is 4. Okay, so this will give you 8 plus 9 plus 1 plus 2. So this will give you 20%. That. So students, very important numerical where we are supposed to find percentage error in kinetic energy, and this time the values are not given in percentage. ठीक है, वो ध्यान दो. So mass का value दिया हुआ है and velocity is given. So let's solve this. Here the value of m is 60 kg, okay, and its error, that is delta m, is 0.3 kg. Then velocity value is 25 centimeter per second. Okay, this is in gram, sorry,
this is given in gram, and delta V error is 0.1 centimeter per second. ठीक है. Now you know the formula for kinetic energy. Kinetic energy formula is half mv square. Got this? अब error कैसे find करने का? See, quite easy. To find the error in kinetic energy, half is a constant, उसमें तो कोई error आएगा नहीं. Then let's consider mass. So mass में क्या लिखोगे? Delta m upon m. Multiply है या divide है तो भी प्लस ही करना है. ठीक है. Mass and velocity are multiplied, प्लस ही करना है. Then velocity का error delta v upon v, and उसका power 2 है. So 2 को क्या करते हैं हम लोग? आगे लिखते हैं. Got this? So this is how we are going to find the error, and we are being asked percentage error. ठीक है. So this will be whole multiplied by 100. Bas, that's it. Now it's the calculation part. So delta m value is 0.3 divided by 60 plus 2 into 0.1 divided by 25 into 100. Let's solve over here the next part. So decimal shift करेंगे, so that will give you 3 upon 600 plus here this will become 0.2, उसका भी decimal shift करो, so 2 upon 250 into 100. Let's divide this. 3 ones are 200, 2 ones are 125. ठीक है. चलो अभी बहुत इजी है. क्रॉस मल्टीप्लाई. So 125 plus 200 divided by 200 into 125, and then we have 100 over here. So 125 plus 200, this will give you 325. And यहाँ पर ये 0 0 कट हो सकता है. ठीक है. So this will give you 250. ठीक है. बस अभी 25 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा. 25 tens are, and then if you divide this by 25, this is 13. So 13 divided by 10, which is 1.3 percentage. Okay. So this is how you get the final answer. So students, we are moving to question number 12. Very interesting sum, concept based, calculation also very interesting. So please pay attention. Here we are being given length, radius and mass. Okay? Length, radius and mass. They have asked you to find the error, percentage error in density, and the shape is cylinder. Okay? So first and foremost, I'll write all the values. Like length value is 4.00, ठीक है. Then delta L is 0.001. Then R value is 0.025. Delta R is 0.001. Mass is 6.25, and delta M 0.01. Now let's think about the formula, because formula के बगैर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते. ठीक है. So density का basic formula everybody knows. It is mass upon volume. But mass का ठीक है, error है. Volume का error किधर दिया है? Volume का तो error नहीं दिया है. So what has to be done for volume? So now you recollect कि volume of cylinder का formula क्या होता है? Volume of cylinder has a formula pi r square h. Okay? So m upon pi r square h. But h was the height of the cylinder. इस बार height के बदले length दिया हुआ है. ठीक है. So n. ये आ गया अपना formula. Now it is easy to write the percentage error. So percentage error in density will have a formula. देखो mass है, so delta m by m. Divide हो या multiply हो, हमको तो प्लस ही करना है, वो तो पता है आपको. पाई, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ये तो कांस्टेंट है. फिर क्या है? रेडियस. सो डेल्टा r अपॉन r रेज टू 2. सो ये 2 को मल्टीप्लाई करना है इधर आगे. देन अगेन प्लस लेंथ डेल्टा l अपॉन l. गॉट दिस? सो ये हो गया फिजिक्स का पार्ट. नाउ इट इज ऑल अबाउट मैथ्स. अभी कैलकुलेशन देखो. सो डेल्टा m, आई जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 0.01 divided by
6.25 plus 2 into 0.001 divided by 0.025 plus 0.001 divided by 4, and this whole multiplied by 100, because we are going to find percentage error. Okay, now the next step I'll write over here. Calculation is quite important, ठीक है, quite interesting, so pay attention. अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डेसिमल शिफ्ट कर देता हूँ, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, two digits, so this will give me 1/625 प्लस ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 0.002 हो जाएगा, एंड शिफ्ट 3 डिजिट्स, ठीक है, तो 3 डिजिट्स शिफ्ट करोगे तो यहां सिर्फ 2 बचेगा, एंड हियर यू विल हैव 25 प्लस इधर भी डेसिमल शिफ्ट कर दो 3 डिजिट्स, सो ये 1 हो जाएगा, एंड यहां पर 3 जीरोस लग जाएगा, सो 4000 into 100. Now what? Now I will solve this part first. सिर्फ पहले दो टर्म सॉल्व करता हूं. So what I'll do? इसको 625 बना सकते हैं हम लोग डिनोमिनेटर को. So I'll multiply this by 25. So सिर्फ डिनोमिनेटर को 25 मल्टीप्लाई करके नहीं चलता है, न्यूमरेटर में भी तो करना पड़ता है. So multiplying 25 over here as well as 25 over here. So मेरा next step देखो, 1/625 plus 625 50 plus 1/4000 into 100. Next, अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, सो एक ही बार लिखेंगे 625 plus 51 1/4000 into 100. Now what? Now cross multiply 51 into 4000. अरे इजी है, so 51 4 जा करो खाली, you will get answer as 204, and then 3 extra zeros 1 2 3 plus ये तो 625 आएगा, एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, फिलहाल ऐसे ही सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख दो into 100, ठीक है. सो व्हेन यू ऐड दिस ये हो जाएगा 204 एंड 625 लास्ट के 3 डिजिट में ऐड हो जाएगा, ठीक है. यहाँ जीरो जीरोस कट हो सकता है, नाउ इट कैन गेट कैंसिल, ठीक है. यहाँ बीच में प्लस था तो नहीं हो सकता था कैंसिल, बट नाउ ये 0 इधर हम 100 के साथ कट कर सकते हैं. ओके, सो यू आर लेफ्ट विद 625 into 40. अब क्या करेंगे, अब 25 से डिवाइड कर दो, सो आई डिवाइड दिस बाय 25, सो 25 जा, ठीक है. इसको 25 से डिवाइड करो ओरली, सो 8 जा 200, 4 बचेगा 4 6, ठीक है. सो 1 जा, देन 21 बचेगा, अगेन 8 जा, ठीक है. देन 12 बचेगा, देन 5 जा. You can, if you are not comfortable with orally, you can definitely side में ऐसे solve कर सकते हो, and you will get the same answer 8185. Okay, now what? See, numerator में 8185 आया है, and denominator if you multiply 25 4s is 100, and then 40 है ना, तो एक और जीरो like this. So बहुत सिंपल हो गया ये तो, 8185 divided by 1000. So this will give you 8.185%. I hope you understood this sum and its calculation. So students, that's it about combination of errors. This video was all regarding combination of errors. Now our next video will be on significant figures and orders of magnitude. Thank you for watching this video.